Philippines faced another severe weather emergency this week as Typhoon Tino, internationally known as Typhoon Kalmaegi, swept across the Central Visayas region early Tuesday morning. The storm, which entered the Philippine area of responsibility on Monday night, made landfall over the eastern coast of Leyte before crossing the islands of Samar, Cebu, Bohol, and Negros. With sustained winds reaching up to 165 kilometers per hour and gusts nearing 185 kilometers h. Typhoon Tino unleashed widespread flooding, power outages, and destruction that affected thousands of families and forced more than 150,000 residents to evacuate from vulnerable areas. According to the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, the typhoon's center was located approximately 285 kilometers east-southeast of Buyuan, eastern Samar, at 11 a.m. on Tuesday. The system was moving west-northwest at around 22 to 25 kilometers per hour, bringing with it heavy rainfall and strong winds as it traveled across the central part of the country. PAGASA issued several tropical cyclone wind signals for provinces in eastern Visayas, central Visayas, and parts of western Visayas, warning of possible flash floods, landslides, and dangerous coastal conditions. Even as the typhoon interacted with mountainous terrain, meteorologists cautioned that it would remain a strong tropical system until it exited toward the West Philippine Sea later in the day. The storm's impact was felt most strongly in the Visayas region, where several provinces faced extensive flooding and wind damage. In Cebu City, water levels rose rapidly overnight, submerging vehicles and forcing families to seek higher ground. Emergency responders used rubber boats to reach stranded residents, while local radio stations broadcast continuous warnings urging people to stay indoors and avoid crossing swollen rivers. In the provinces of Leyte and southern Leyte, the situation was particularly severe as rivers overflowed and flash floods washed through residential areas. Communities near Mount Conlayon on Negros Island were placed on high alert due to fears that heavy rainfall could trigger volcanic mudflows or landslides. Many small coastal villages were temporarily cut off as roads became impassable and power lines went down under the weight of fallen trees. Makapunta ko emergency. Pwede pa apat atong ni Kapita Milia Azalea Kotkot Liluan, please. Please, guys. Government authorities confirmed the first casualty on Tuesday morning, an elderly man in southern Leyte who was swept away by fast-moving floodwaters. Later updates from local officials and international news agencies, such as the Associated Press, reported a second death in Bohol, where strong winds caused a large tree to fall on a passing vehicle. While the official number of casualties remained low, the storm's full impact was still being assessed as emergency teams struggled to reach isolated communities. PAGASA described Typhoon Tino as the 20th tropical cyclone to hit the Philippines in 2025, emphasizing that the country's exposure to severe storms has intensified in recent years. Evacuation efforts were carried out swiftly across the Central Islands. Local governments in eastern Samar, Leyte, and Cebu activated emergency protocols even before landfall, relocating tens of thousands of residents from coastal and landslide-prone areas to designated shelters. Schools, churches, and gymnasiums were converted into evacuation centers, providing temporary refuge for those displaced by the storm. The Philippine Coast Guard suspended all sea travel in the Central Archipelago, leaving more than 3,000 passengers stranded at ports. Major airlines canceled dozens of flights to and from Cebu, Iloilo, and Tacloban, citing strong crosswinds
poor visibility. President Ferdinand Marcos Jr. instructed the National Disaster Risk Reduction and Management Council to coordinate relief operations and ensure the swift distribution of essential supplies, such as food, drinking water, and blankets. In a public statement, he expressed sympathy for affected families and reminded local officials to prioritize safety and preparedness. "We must remain vigilant," the president said. "Our people have faced storms before, and together we will recover from this one as well." Government relief agencies, supported by the Philippine Red Cross and local volunteers, began delivering aid on Tuesday afternoon, focusing on flood-stricken communities in Leyte and Cebu. Scenes from across the Visayas reflected the storm's destructive power. In Cebu and southern Leyte, residents described roofs torn from houses, banana plantations flattened, and vehicles overturned by the strong wind. Aerial नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर राजस्थान पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में राजस्थान के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस समय दोस्तों 8 नवंबर के दिन राजस्थान की तरफ बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। लगातार हिमालय पर्वतों की तरफ से ठंडी हवाएं राजस्थान के हिस्सों पर पहुंच रही, जिसके कारण सर्दी का प्रभाव धीरे धीरे तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 8 नवंबर के दिन श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली तमाम भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथना, टोंक इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 9 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। दोस्तों 9 नवंबर के दिन देखा जाए तो अरेबियन सी की तरफ से लगातार शुष्क हवाएं पहुंच रही हैं और ठंडी हवाएं पहाड़ी हिस्सों से होते हुए राजस्थान की तरफ पहुंच रही हैं। लेकिन जब तक कई नमी वाली हवाएं नहीं पहुंचेंगी तब तक दोस्तों राजस्थान के भागों पर बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नजर नहीं आने वाली है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथना, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। नागौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास के भागों पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। लगातार ठंडी हवाएं तेजी से चलती रहेंगी। श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर, जयपुर, अलवर, सीकर के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा। 10 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 नवंबर के दिन ऑल ओवर राजस्थान के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 10 नवंबर के दिन भी राजस्थान की तरफ मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि पर्वतीय हिस्सों पर कोई भी जब तक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचेगा दोस्तों तब तक राजस्थान की तरफ बारिश की संभावनाएं नहीं बढ़ने वाली है। लगातार ठंडी हवाएं तो चलती रहेंगी और सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर सभी भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सिरोही, फलौदी इन सभी भागों पर
अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। 11 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 11 नवंबर के दिन देखा जाए तो गंगा के मैदानी भागों से लेकर राजस्थान तक भयंकर सर्दी का एहसास बढ़ने लगेगा। रात्रि के समय, दिन के समय तो थोड़ी सी कम सर्दी रहेगी, लेकिन रात्रि के समय अत्यधिक सर्दी पड़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो ठंडी हवाएं चल रही हैं दोस्तों, उन हवाओं की रफ्तार भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार शहर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। और देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखे जाने की उम्मीद है। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सुरई, फलौदी, इन सभी भागों पर 11 नवंबर के दिन मौसम साफ रहने की पूरी उम्मीद है। 12 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 नवंबर के दिन राजस्थान के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। 12 नवंबर के दिन भी कुछ